ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। Bienvenue à आज Vyakti Parivar. तपस्या Aujourd'hui, c'est le तपस्या 5e का jour अर्थ de शक्ति के Tapasya. स्वरूप में Tapasya veut ध्यान dire करना। आज rester dans la हम forme अव्यक्त श्लोक combinée पढ़ेंगे de la और Shiv अपनी ध्यान Shakti. से सुनेंगे। 5वां दिन ये अव्यक्त इशारे ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए समान व संपन्न बनो। पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। Suivez le ब्रह्मचारी का Père अर्थ Brahma बाबा qui के vit avec आश्रम sa में double चलते हुए, force, Baba जिसे et फॉलो moi. फादर कहा जाता Oh है, là là, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Brahmachari veut dire celui qui suit les enseignements de Brahma. On doit suivre le Père Brahma. On doit devenir comme le Père Shiva dans notre niveau, mais on doit suivre le Père Brahma dans nos actions. Suivons le Père Brahma à chaque pas. Ce n'est pas le devoir. Non. C'est des devoirs supplémentaires. ओम शांति। Om Shanti. आप सभी स्वस्थ हैं, ठीक हैं? आपकी Êtes-vous tous en bonne santé? OK. यात्रा जरूर अच्छी ही चल रही Votre होगी। tapasya, je suis certaine que votre tapasya et que votre souvenir, votre pèlerinage du souvenir va bien. Baba dit, on doit être dans le souvenir, mais on doit aussi une demande. La conscience et l'autre, c'est se rappeler. On a un but d'être constamment dans le souvenir de Baba. Alors Baba dit, on doit avoir le souvenir sur la base du souvenir, sur la base de la connaissance, pardon. On a le souvenir de la connaissance sur le chemin de la dévotion, ce que l'on apprend dans la connaissance, c'est ce qu'ils font. On est donneur, on a beaucoup de louanges et sur le chemin de la dévotion, ils chantent la louange de Shiv Baba et on dit aussi que le chemin de la connaissance, ce sont les responsabilités et les tâches de Baba et ce sont aussi les vertus de Baba. Et sur le chemin de la dévotion, Baba donne beaucoup d'exemples. Si quelqu'un tue la vie, il pense que le pouvoir de Baba, c'est de redonner le pouvoir à la vie, de ramener à la vie. Mais même si le Père est en mesure, Shiva est en mesure de rendre l'impossible possible, il ne se sert pas de cela pour redonner la vie à quelque chose qui est mort. Alors, on doit pratiquer à être incorporel et le souvenir basé sur la connaissance. Le souvenir vient du cœur
Le souvenir basé sur l'intellect est différent, mais ce qui vient du cœur, c'est l'idée de reconnaître quand aussitôt qu'on a la pensée du souvenir, on a une connexion instantanée avec Papa. Vous recevrez toujours une réponse de Papa, peu importe le pouvoir dont vous avez besoin, quelle que soit la vertu dont vous avez besoin, la compagnie de Baba, vous la sentirez. Le mot Baba, on le dit tous et on sait tous qu'il est Dieu. On peut l'appeler de toutes sortes de noms, Ishva, mais sur le chemin de la dévotion, on l'appelle la mère et le père. Et à l'âge de confluence, on l'appelle Baba. Nous sommes la création de la bouche de Brahma. Et nous disons Baba et Mama. Même sur le chemin de la dévotion, on dit tu es la mère, le père et l'ami et tu nous donnes un bonheur illimité. Et en ce moment, nous avons une relation personnelle avec Baba. Le souvenir basé sur cette relation, qui est ma mère et mon père, le sentiment qu'il est, ma mère et mon père est là. Et quand ce sentiment est là, nous suivons Baba à chaque pas. Et quand le souvenir est là, la conscience de je suis Shiv Shakti. Je sais que je dois complètement suivre les caractéristiques de Brahma Baba. Par où commençons-nous? Il y a toutes sortes d'évocations. La façon dont Brahma Baba parlait aux enfants. Brahma Baba ne disait jamais rien sans commencer par 12 enfants. Et Baba nous donnait du respect à chaque enfant. Aujourd'hui, basé sur le drama, peu importe mon rôle, quand je suis venue à Baba, j'étais très jeune quand je suis venue à Baba, j'avais 16 ans, dit Moïni. Et Baba me faisait asseoir, assister à de grandes rencontres, de grandes assemblées. Et il prenait notre point de vue et il disait, enfant, qu'est-ce que vous en pensez? Avec Baba, on pouvait lui donner notre point de vue. Et maintenant, je pense, qu'est-ce que Brahma Baba voyait en moi pour qu'il me donne autant de respect? La façon dont Brahma Baba nous regardait, il nous voyait chacun comme étant digne. Mais c'était aussi dans ses paroles aussi. Il disait, enfant, ma fille. Il y avait beaucoup de responsabilités dans le yagya et chacun les faisait avec plaisir. Et Baba encourageait ses actions et ses tâches. Il il encourageait chaque enfant dans leur spécialité et personnellement, il encourageait les enfants. Il y avait les compliments dans les murlis, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect et d'amour. Et cela a été mon expérience, dit Moïni. Quelles que soient nos spécialités, à nous les enfants,
आप लोग जब ये याद प्यार सुनते हो तो nous फिर आप pouvions, बच्चे लिखो nous होशियार हो, pouvions les utiliser कितना अच्छा लगता है quand on कि आप reçoit होशियार हो। Namasté. Il dit, ça va, mon तो enfant. कैसे हम सभी भी Il इस complimentait les उदाहरण enfants. का पालन करें कि एक दूसरे को सम्मान दें, Comment chacun de nous ताकि अगर pouvons-nous दूसरे को suivre नवाजा है ces spécialités, तो उसको जितना आप सम्मान देंगे les बाबा भी voir, उतना chacun de देंगे। nous? ये बाबा ने आज कहा Plus un है enfant est और petit, बच्चे को plus तू le jeune करके बुलाओ, enfant va, तू करके बुलाओ। plus on lui donne du respect, plus il va en उसको donner. तो समझ नहीं ना, जब तक बड़ा हो तब वो आप On सिखाओ। doit, quand किस तरीके से आपस quand में il y a भाषा un का jeune, on dit महत्व है, tu, quand on dit plus vieux, on dit वो vous, ब्राह्मण तरीके से même le आपस में langage que l'on बताते हैं। utilise. La façon जितना dont आप les देंगे brahmines उतना donnent आपको du मिलेगा, respect les uns aux तो autres, करें। plus on donne du respect, plus on तो reçoit बाबा आज ce même type परसों de आपने respect. कभी विस्तार में आप लोगों को मालूम भी है, सोच भी सकते हैं, परंतु क्या लक्ष्य रखेंगे हम On कल? connaît en détail, इस on connaît en विस्तार détail का मतलब है les compliments, les encouragements de हमारे Baba. संकल्प, Qu'est-ce qu'on doit garder dans notre संस्कार, esprit? हर Les प्रकार की pensées, nos शुद्धता, paroles complètement pures. एक Tout दूसरे को doit être ऐसे pur, les ऐसे देखते pensées, हुए les paroles, वैसा हमारा et de व्यवहार हो, voir l'autre दोनों avec, सब en les कहेंगे voyant avec आचार्य। pureté. Les paroles doivent être तो ainsi, ब्रह्मा बाबा के बारे में आपने बहुत कुछ et सीखा है ainsi on devient और Brahma हम Shari. पढ़ भी सकते À हैं, ce moment-là, on इसी तरह suit के les pas, आशीर्वाद les लेते हैं enseignements de Brahma Baba. कि हम फॉलो Et करते demain, on हैं donnera une जो attention हमारे संत spéciale बने en, en suivant ब्राह्मण जो complètement बने Brahma Baba pour तो devenir आचार्य égal à सेवा Baba, कर pour सके, que l'on devienne हमारी éventuellement des स्थिति instruments. अच्छी हो, Donc, हमारी la यादें tâche, अच्छी हो, notre niveau doit être इन bon, दोनों बातों के notre लिए souvenir doit aussi être हमें bon. कई अभ्यास चाहिए। Pour le niveau, il y a ये सब beaucoup de कुछ सीखे हैं pratiques. Il est nécessaire de pratiquer beaucoup. और याद चाहिए Et c'est ainsi qu'on peut कि बाप समान बने, réussir. पिछले विकल्प विनाश हो, Le souvenir तो nous यादें permet de चाहिए। devenir égal au Père. Et इस तरह से sur हम le सत्संग souvenir, c'est चक्र को aussi le feu आगे बढ़ाते sur चलेंगे। le chemin du souvenir qui brûle les sanskars, les vieux sanskars. Et le jour 5, tapasya, tapasya veut dire, तपस्या signifie का अर्थ है rester dans la forme शिव शक्ति combinée स्वरूप de में Shiv कंबाइंड Shakti. रहना, Suivez le Père बाबा जी को Brahma फॉलो qui करें vit. उनके कंबाइंड रूप में और उनकी जीवन को डेवलप Baba et समझा moi, Bab करें। Dada. बाबा और मैं, बाप दादा Suivez, अपनी स्थिति में बाप को suivez Bab dans और votre अपने niveau कर्मों incorporel में et दादा को Dada dans फॉलो vos करें। actions. ओम शांति। Om Shanti.